We spend half the life earning wealth, losing health. And then the second half of the life, we lose that wealth to earn back that health. लेकिन उस degree of health कभी नहीं आता है. What is yoga? Yoga is not just asanas, it's just 1/8 of all life of everything that is there in the universe. Ultimate goal of yoga or yoga happens when you are, and in many cases, yoga and medication have to go together. Sympathetic nervous system का काम आता है when you're working and when you're in an actually challenging situation. क्या योगा मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर सकता है? Yoga karmasu kaushalam. The way you work, it brings about more kaushal. It brings about more refinement in the work that you do when you practice yoga. सबसे बड़ा myth है I practice meditation, I practice mindfulness. Mindfulness is the result of mindlessness. That is meditation. When you come out of meditation, then awareness increases. By 2030, 48% of Europe will be under depression, mental depression. And it started. And only thing that will uplift the human or the mankind is. Hi, I'm Divya Jain, and I'm the founder of Safe Educate and Because She Can. I'm a social entrepreneur who's been working in the space of skilling for the past 14 years, working on empowering the wonderful youth of our country. Today, we're speaking with the amazing Snigdha Bharadwaj. She is an ex defense veteran, but today she comes to us as a yogic healer. She is a yoga practitioner who has mastered the art of different yoga mudras and how you can use that to make your life better, how you can use that to cure everyday ailments as well as extremely serious illnesses. We start this conversation by talking about yoga. कि पर्पस क्या है योगा का, what really are we trying to achieve by introducing yoga into our lives. We talk about how it can actually help us cure diseases, deal with illnesses. We talk about the science behind mudras, also practicing different mudras that can help us with anxiety, that can help us increase our concentration, focus, depression, illnesses. We talk about the right way of breathing. And in this conversation, you're going to get lots of very practical hacks that you can start using right now on your desk while you're traveling, while you're at work, while you're at school. So keep watching. The episode starts in 3, 2, 1. Thank you so much, Digna, for being here today. And I'm so excited for our conversation. It's likewise, same here. I've been actually waiting for this day. Signa, I've been so amazed by your journey, by your personal journey, by your journey with yoga, and how you've actually used it and how you're simplifying it to just help millions, not just in India, but across the globe. But before we really get into how we can help, what you've done, and what are the actual practical hacks we can use in our lives, मैं शायद एक थोड़ा डीपर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि what is yoga? Yoga एक ऐसा वर्ड है that has been used and abused by everyone and anyone. From every fancy fitness studio, मैं वेस्ट की क्या बात करूँ, इवन इन आर ईस्ट, हमने उसको एक कॉन्वल्यूटेड मेस बना दिया है. हमने बोल दिया है इट्स योर गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड. आप दुखी हो, आपको मोटे हो, आपको पतला होना है तो योगा कर लो, 108 सूर्य नमस्कार कर लो. आपको टेंस्ड हो, डिप्रेशन है तो योगा से काम आ जाएगा. Like, but really, what is yoga for you? What does it mean? Uh, as you rightly said, Divya, yoga has been really abused. And I would like to reiterate here that first going to the history of yoga from now. पहले तो योग था, right? Ancient history में. Yoga means? Yog means yuj. That means union of body, breath, and mind. Okay. That's where the word yog came. And Union of? body, breath, and mind. So I'll tell you what happens then. How do we do that? Or it was not popular in India. It was practiced only by rishis and munis and people who have left the sansaric world and all.
and it was we used to be a matter of कहते हैं ना, लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे इंडिया में योगा करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये सब, बट योगीज करते हैं। योगीज करते हैं. But when few Westerns they came, they experienced, they learned, they went back. उसके बाद वहाँ से जब प्रैक्टिस शुरू हुई, then योग became yoga. अब यहाँ पे फैशन स्टेटमेंट बन गया, योगा करते हैं, चलो जैसे भी आया आया, बढ़िया, राइट. बट व्हाट इज़ योगा? आजकल देखो, इट हैज़ बीन इतना ज़्यादा इसका अब्यूज़ हुआ है. डॉग योगा, बिल्ली योगा, पता नहीं, बियर योगा, बियर पी के बैलेंस करें, देखो हम योगा कर रहे हैं. नो, यू आर नॉट डूइंग योगा, यू आर डूइंग अ फूलिश एक्ट. योगा के लिए जो एक्चुअल रेवरेंस और रिस्पेक्ट चाहिए, दैट इज यू start it with reverence, with gratitude, get onto the yoga mat, and then when you get into an asan, आप आसन में कैसे जाते हो, Okay. फिर उसके बाद आसन में रह के आर यू रियली रिलैक्सिंग, और यू जस्ट कि और टेढ़े हो जाएं और घूम जाएं, ये करें. आर यू looking at your breath, are you looking at the, are you relaxing with every breath out, is your mind coming together? सो यहाँ पे एक ही आसन करो, लेकिन उसको आप पूरी तरह से करो. जब माइंड शांत होता है उस आसन में, देन योगा हैपन्स. ठीक है. एंड योग इज नॉट जस्ट आसन्स, इट्स जस्ट 1/8 ऑफ ऑल लाइफ, ऑफ एवरीथिंग दैट इज देयर इन द यूनिवर्स. एज इन पतंजलि योग सूत्र जो है ना, तो उसमें आसन इज वन ऑफ द 8 limbs, दैट्स ऑल. Ultimate goal of yoga or yog happens when you are meditating after a nice asan, or to after you have removed the rajas, the restlessness from the body, and then the mind calms down, and then you sit for meditation, and that's when you go deep into it. So ध्यान जो है meditation, उससे भी ज़्यादा अंदर जाने का है samadhi, where you actually touch your superconscious level. So that's when yoga happens. So these are all the process, step by step process, the levels to reach that goal. अगर कोई कहता है हम योगा क्लास लेते हैं, तो आपकी क्लास में क्या होता है? मेडिटेशन होता है? नहीं होता है तो आप एक्सरसाइज करा के हटाओ, ठीक है, उस समय के लिए माइंड शांत हो जाएगा, ओनली एट द माइंड लेवल. बट व्हाट अबाउट द अदर लेवल्स ऑफ द माइंड, द कॉन्शियसनेस? हमें वहाँ तक जाना है ना. 4 स्टेट्स होते हैं ना, 4 लेवल्स होते हैं. कॉन्शियसनेस होता है, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड. And yoga is essentially a process द or a जर्नी फ्रॉम journey. कॉन्शियस टू द और सुपर जर्नी कॉन्शियस. तो आप चालू करते हैं यस, with saying that hey I'm conscious, यस, and कैसे मैं इन यू इन मुद्राओं से और इस ब्रेथ वर्क से मैं अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में correct, पहुंचूं. correct. And that is the seat of energy. 1 second dip into that will, when you come out, you are absolutely, you have boundless energy. Itna joy, itna happiness, you don't actually need a reason to be happy. You are happy from within. बाकी सब चीज़ें तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं. व्हेन यू गेट इनटू दीज प्रैक्टिसेस, we can call it spiritual practice. Spiritual practice is nothing but minding your mind. Right. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. जो उसको भी लोगों ने बिगाड़ दिया आजकल. स्पिरिचुअल मतलब व्हेन यू हैव रिटायर्ड एंड यू हैव गॉन लीडिंग अ रिटायर, देन यू बिकम स्पिरिचुअल. नो, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर स्टिल यंग. बिकम स्पिरिचुअल इन द सेंस, लर्न टू मैनेज योर माइंड. यू कैन डू PhD इन मैनी सब्जेक्ट्स, राइट. मास्टर्स कर सकते हो, PhD कर सकते हो, लेकिन किसी ने भी ये बताया माइंड कैसे मैनेज करते हो? बताओ, कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है. और तो और बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है, यू आर नॉट सपोज टू क्राई बिकॉज यू आर बॉय. क्यों ना Right. भाई, क्यों ना क्राई करें भैया? Right. दे हैव इमोशंस, दे हैव एवरीथिंग, राइट. सो मैनेजिंग द माइंड. So is for you मतलब, and I'd love to talk about this, is कि is yoga a spiritual practice? Uh, is yoga a way to become more spiritual? Is it a path to spirituality? मतलब, what is the connection between yoga and spirituality for you? Yoga is spirituality. If you're doing the yoga the way I have explained, then it is spirituality. And the more you are, not the more, even if you devote at least 30 minutes of your time out of 24 hours in a day, you are set for the to face the whole day. It's how the situations come at you and how you manage those situations. Right. Are you in a reactive mode or a responsive mode? Beautiful. रिएक्शन जो होता है, किसी ने मान लो कॉर्पोरेट में गए, किसी ने स्टिंकर लिख दिया ईमेल, अच्छा उसको देख के गुस्सा आ जाएगा, यू राइट अ डबल स्टिंकर, मतलब सारे रिश्ते बराबर कर दो उसमें, हाँ, और उसको आप भेज दो.
थोड़ी देर बाद आपके ऊपर आएंगे, गाज गिरेगी, एंड देन यू रिग्रेट, ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों। इंस्टेड ठीक है, जो उतारना है उतार दो, go out 15 मिनट्स तक थोड़ा लंबी सांस लो. This is how I used to practice when I was working while practicing my spiritual techniques of Sudarshan Kriya, Sahaj Samadhi meditation, from because I'm an art of living teacher also. So go out in the fresh air, take few long deep breaths, and breath, I'll tell you about the magic of breath, and come down. And when you read those things, you will say, was it me who has written that? Right. And then you get into the responsive mode. Responsive mode will never bring you regret. You will always, you would have thought through. The intellect would be very sharp as to how to handle the situation. So spirituality is all about handling a situation. That's beautiful. And what you've also said, Snigdha, is yoga's not कि आपको, yes, you have to do it for 20 minutes or 30 minutes in a day. That actually sets you up to handle your day, handle your life. And more than that, you can actually introduce yoga in almost every action that you Yes, take. yoga karma su kaushalam, the way Okay. it has been told in Bhagavad Gita. Okay, what is that? Yoga karmasu kaushalam. In every work, the way you work, it brings about more kaushal. It brings about more refinement in the work that you do when you practice yoga. Beautiful. So every minute, every second of the day of your life becomes yoga when you are in awareness and relaxed. And when can you be that? Only if you have practiced some meditation. Beautiful. That is the end product of yoga. And Snigdha, tell me about, आपने बोला जो the yoga that you practice is Raj Yoga. And there are different forms and formats of yoga that are today being followed and practiced. तो इसका क्या मतलब, what is the So basis and what is the yeah, मतलब what is the father, mother, या कैसे ये हमारे इतनी सारी versions of yoga आए हैं, क्या हमें practice करना चाहिए, या क्या कोई बोलता है विन्यासा, हता, etc., etc. What are these different versions? if we take the physical aspect of yoga, then hatha yoga is the hatha yoga means hat means शरीर, शरीर के साथ जो योगा होता है लेकिन करते हैं, उससे शरीर के ऊपर है साथ आसन राज वगैरह योगा, जो है। लेकिन उससे पहले राज योगा. नहीं, राजयोग है, हठ योगा इज यू कैन से द सबसेट। अब राजयोग में मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, सारी चीजें आ जाती हैं, Okay. राइट। एंड अब आसन जो है, आसन में कौन सा है? हठ योग है, Okay. राइट। हठ इज द फिजिकल एस्पेक्ट। हठ योग में बहुत सारे आई कैन से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी, लाइक विन्यासा, फ्लो, एंड as I already mentioned, bear yoga, dog yoga, billy yoga, all kinds of yoga. No, that is not. Just practice the authentic, traditional, simple yoga. Even if you are doing a simple 2 or 3 asanas on a yoga mat, but with full awareness, using your breath, your mind, everything, yoga has happened. We have to understand why we are doing asana. Right. We are doing asana to remove the restlessness in the body, because our ultimate goal is to sit for meditation, where the mind calms down. You get the ultimate rest, deeper than the deepest sleep, when you do meditation. So it's said that when you meditate for 20 minutes, it gives you rest as much as 4 to 5 hours of deep sleep. Wow. That doesn't mean that you have to replace the sleep. Body needs the sleep, but that is the amount of rest. So when the mind is rested, it's like you have deleted all the unwanted numbers from your mobile, Right. right? And then the mind is clean, the slate is clean. And at that time, the focus, the concentration, those are the after effects of meditation. So that's where the yoga happens. So to answer your question again, just 2 or 3 asanas themselves. Go for a walk, nature walk, come down, stretches with the breath. You do only upward stretch with the breath. Yoga happens. So vinyasa and all, it's good, it's glamorous, it sounds good. Okay, I'm able to balance having a glass of beer or something, but it's full, especially beer yoga and all, foolish. And you know what I'm also, जो आप बोल रहे हैं, rages, like hatha yoga, ये जो भी आपके आसन है, it's taking that restlessness that is already there in the body, Yeah.
एंड उसके लिए आपको शायद कुछ फिजिकल मूवमेंट करने Yes. की ज़रूरत है. Yes. So it's this process that's taking you Correct. So there. because when you sit for meditation, thoughts bombard you. Right, And thoughts are because the body is restless. right. Mind is restless. So you have to tire the body out to some extent. पहले body को fit रखने के लिए effort चाहिए, mind को fit रखने के लिए effortlessness चाहिए. Art of doing nothing is meditation. For example, as I was telling you, this is my favorite example, that when we go to the Vaishno Vaishno Devi Devi, हाँ temple, जी, right? yes, Yeah. absolutely. So we walk 13 kilometers, right? And then we are tired. And as soon as we come, देवी के सामने जब बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, लगता है अरे वाह क्या मजा आ गया, अच्छा लगता है. वो जो few seconds के लिए आंखें बंद करते हैं, you are into nothingness. Meditation has happened. You have touched some consciousness, some part of the consciousness. And when you open, that's why you feel so good. वहाँ कोई रीजन है, अरे भैया 13 किलोमीटर थक के आ रहे हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे हम लेकिन आप अपने फिर भी वो बोल खुश हो. रहे हैं, हम अपनी माता की वो लगा रहे हैं, गाने गा हाँ, रहे हैं. कितना अच्छा लग रहा है. And but that's also the process that was required to take करेक्ट, you to. करेक्ट, करेक्ट. सो उतना अगर बॉडी अगर नहीं, जैसे एज हो जाती है, अब नहीं जा पाते हैं, तो आप दुखी मत होइए. आप यहीं पे कुछ कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जॉइंट्स का कर लो, कुछ तो करो. उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, हो जाएगा. और फिर आपका माइंड जब क्लियर रहेगा, शांत रहेगा, तब आप अपना काम भी देखो, कितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली में अच्छा माहौल बन सकता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी. Stikta, tell me about, yoga, and of course, it's our way to get to super consciousness. करेक्ट. It is also, and something that you've been done is, it's been known and used to create, cure a lot of diseases, illnesses. आपका क्या experience रहा है in the use of yoga in, curing illnesses or curing diseases or pains and inflections which possibly weren't responding to medical treatment? And very importantly, कि क्या yoga medical treatment को replace कर सकता है या both of them work together? And what is the right balance between them? The yoga is a preventive action, definitely. And in many cases, yoga and medication have to go together, right? Yoga definitely hastens the healing process, right? And let's talk about mudra here then. Mudra is an ancient sign, because you asked about kitne disease cure hue hain, kya hue hain. And that's what I show in Yogic Hacks also, healing through mudra. So, mudra is a very, very ancient science. It is a science of it's completely dependent on your body. कहते हैं Okay, ना, वो health आपकी उंगलियों में है. okay. उसमें, because I show hasta yoga, and there are the hasta mudra. There are 5 types of So mudras. when I Let's just for clarity, mudra is anything that uses the fingers. The fingers, there are 5 types of mudra. There's mudras through body, mudras through face and all, mudras through bandhas, all those mudras are there. But I show through hands. Hands. Yeah, these fingers. The science behind this, as research has found out, is we have electromagnetic waves, radiations in the body. Okay. Right? Electricity, bioelectricity. जैसे अब थोड़ा सा पीछे जाए, being an engineer, वो दिमाग आ गया मेरा. Electrons है, atoms है, the whole human body is made up of atoms. तो electrons, neutrons, protons होते हैं. Electrons move, they are mobile, right? They move Right, right. from They're one atom. working, they're Yeah, moving, in a, we are one huge organism, that's all. and this is जो energy हमारी body में Yes, flow so कर रही those है. are the movement of electrons. That is called electrical energy. अगर आप switch on करो तो ये electrical energy है. In the body it becomes bioelectrical energy. Neurotransmitters brain में जो होते हैं, that's all electrical energy, bioelectrical energy. तो उसमें से electromagnetic waves definitely हैं हमारे उसमें, and they are going to the connecting to the spine also. Spine में जो nerves निकलते हैं, they are attaching, they are they're going to every part of the body. We can say the nervous system, the central nervous system. So the right side is the parasympathetic nervous system, the left is the sympathetic, sorry, the left is sympathetic, and the right is sympathetic. What does that mean? So there's central nervous system has 2 types of nerves. Parasympathetic is rest and digest. Okay. It's when you do your pranayama, when you do meditation, or you feel calm and all. So That that's means the resting. parasympathetic system. Sympathetic nervous system is
फाइट एंड फ्लाइट, यू आर ऑलवेज इन पैनिक, ऑलवेज इन स्ट्रेस। यहाँ तक कि अगर रोड भी क्रॉस करना होगा तो आपको स्ट्रेस रहेगा पूरा, फॉर नो रीज़न। यू आर ऑलवेज ऑन योर गार्ड, Right. प्रोटेक्शन करना, ये करना, वो करना है, जो कि आज की दुनिया में लोग कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ बिकम अ fashionable statement which is a goal for somebody, Right. for everyone, but never able to achieve unless they are onto the path. तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम आता है व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर इन एक्चुअली चैलेंजिंग सिचुएशन। अब हम जंगलों में नहीं रहते हैं कि शेर आ रहा है इधर से तो हमेशा हो वो जाता है. अपने तलवार लेके खड़ी खड़े रहें। Yeah, and और हमारा that's also the way we were built, right? यस यस Like अगर यस आप यस, Homo deus पढ़े, so it's we were built as करेक्ट to करेक्ट, survive in the jungle. हाँ तो हमारा जो survival में already it's built in करेक्ट। कि okay fine तो this is to एड्रेनलिन yeah, रश, so there's already those things कि survive so fight and flight, तो वो automatically हमारा activate तो हो जाता है, लेकिन हमें उसको control. कंट्रोल नहीं कर पाते, और कहाँ नहीं होना एक्टिवेट वो हमें पता ही नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और आजकल का आप देखोगे, इफ़ यू थोड़ा ध्यान दोगे, अभी नहीं तो कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद एक और फैशनेबल टर्म आएगा, टर्मिनोलॉजी, वेगल टोन। Vagal tone. Vagal tone, it's Okay. related to the vagus nerve. Okay. Vagus nerve is the longest nerve in the body that has its tentacles into every organ. तो जैसे ही आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, वेगस नर्व हिल जाती है, परेशान हो जाती है। तो द एरिया वे इट्स टचिंग, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री एंड जेलस एंड बहुत सारी चीज़ें, तो आपके लिवर और इस एरिया को हाँ जी. करे, ऐसे ही अपना अपना सब और एक यहाँ एक पे फिर एरिया। हाँ सडनली एक वो एंजाइटी आ यस जाएगा, यस, हाँ या एंजाइटी होएगा हाँ, तो यहाँ पे यहाँ आएगा. पैल्पिटेशन होगा, हाँ जी. हाँ. ऑल दिस तो मेन चक्रास जो है राइट वहाँ पे, राइट. जैसे ग्रीफ होता है तो यहाँ पे हाँ जी. थायराइड वगैरह शुरू हो जाएगा, ऐसी चीज़ें, दीज आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीजेस, राइट। सो इनका सो ये जो है अपना पैरासिम्पैथेटिक, और जो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, इट बैलेंसेस द वेगस नर्व, जिसको एंशंट हिस्ट्री में कहा गया था, जो कहते हैं ना, लेफ्ट साइड इज ईड़ा नाड़ी, राइट इज पिंगला, दैट इज parasympathetic and sympathetic nervous system. The center is sushumna nadi, which is the vagus. नर्व. तो ये तो हमने हजारों साल पहले एक्सपीरियंस कर लिया स्पिरिचुअलिटी। साइंस नाउ, साइंस रिसर्च्ड ऑन दिस। जब उनको पता चला, अरे ये तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक, ये राइट. हो रहा है, वेगल टोन इम्प्रूव हो रहा है, दैट्स वाई यू आर कमिंग calm, डाउन. mind calm हो रहा है, oh yes we should meditate, we should do pranayam, we should do breathing, everything. Science, spirituality is the world of experience. कुछ नहीं करना, जो बोला जाए, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, ये स्पिरिचुअलिटी है। रिसर्च साइंस इज, उनको सब्जेक्ट मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अ सब्जेक्ट टू रिसर्च, दे डू, बहुत साल रिसर्च लगाए होगा, उसके बाद एक वो मिलेगा, जब वो चीज़ आएगी, प्रूफ आएगा. अगेन प्रूफ आएगा कहीं आउटसाइड कंट्री से, तब उस पर ठप्पा लग जाएगा, अरे यार ये करो, ये तुम पहले ही कर रहे थे। एंड दिस ब्यूटीफुल राइट कि जो हमारी सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज है वो है, एंड दैट एक्सपीरियंस टुडे इज एक्चुअली बीन backed by science, and as an electrical engineer Yes. you can actually Yeah, connect these correct, dots. correct. And And अभी कहा गया है, रिसर्च है, say that in 19 by 2030 48% of Europe will be under depression, mental depression, and it started. And only thing that will uplift the human or the mankind is these practices. this ability to manage your mind and Yes. manage. So going back to these two sides and the role of हाँ mudras मुद्राज, here. आई एम सॉरी, या आई डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। सो मुद्रा में क्या होता है, द साइंस जो है, अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन सारे कुछ हो रहे हैं, सो द स्किन ऑल्सो एमिट्स द रेडिएशंस। टच, लाइट टच करो तो आपको फीलिंग होगी, नहीं यहाँ पे टच करो तो यहाँ पे कुछ कुछ होने लगेगा, ऐसा होता है। द फिंगर टिप्स हैव those radiations coming out, the maximum radiations come out, the vibration on the fingertips, the sensory nerve endings on the fingertips. The moment you touch the tip of the finger to each other here lightly, and when you are doing the practices like meditation and all, you'll become very sensitive to the gentle vibrations that start happening. That is the connection has happened, and the escaping, the energies that are escaping have been arrested here, right? And this gets into the suppose you are
doing this mudra. This is Vayu mudra. If excess of vata or air imbalance in the body is there, then you have to take this. All right. So it clears out the excess air in the जो gas होती है और ये परेशानियां होती हैं, joint pains वगैरह उसी से होता है. The moment you do this, the sensory nerves take this information to the brain. Okay, this is there, something has to be reduced. So brain takes the energy to those parts of the body where the vata is excess and the disease is in making. This is the science of mudra, very scientific. तो यहाँ पे basically it's So sending that whichever, signal. yes. So whichever finger that you take to the base of the thumb, it reduces. Before that, I'll just take you to the to another fact that we all know we are made up of 5 elements, right? First is thumb is Agni, fire. This is Vayu, air element. This is Akash, space, ether. This is Prithvi, earth. And this is water. Okay. हाँ. अब नाउ ब्रिंगिंग दीज इनटू द बॉडी, कहाँ कहाँ क्या है अब बताते हैं. आकाश, स्पेस इज द हेड एरिया. सारे आइडियाज यहीं पे होते हैं, सारी चंचलता यहीं पे होती है. ठीक. उसके बाद हम आते हैं वायु, एयर एलिमेंट. Yeah, एयर lungs. एलिमेंट इज डायफ्राम एंड टू द नोज. Air element, right? And then comes the this area. This is the Agni. Okay. Agni is fire element. खाना आता है, पचता यहाँ पे है, digestion. जठर अग्नि जो होती है पचता है, from diaphragm to the navel side. And then comes the water element, jal, from diaphragm, from the navel to the thigh. Then comes the prithvi, thigh to feet. This is how we are made up of, and the energies are distributed. And it is, everything is the play of all these 5 elements in the body, Beautiful. right? And This is for the जब आप Akash, so this is going to be for the right, head. right. And now the combination of these 5 leads to 3 gunas. That is Rajas, which we talked about, Which tamas, is energy, restlessness and all. restlessness, Imbalance causes. balance. Otherwise, restlessness is needed. Rajas is needed to even to lift this glass of water. This is Rajas. And Action. मतलब action, that's the ability for your at body the physical to level. any Yeah. physical action, Yeah. any movement will Correct. require some Right. action and It's all the activity. combination of these 5 elements. Then tamas आ जाता है. Tamas is what you need during sleep. Tamas नहीं रहेगा तो नींद नहीं आएगी. जी. और तमस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो that means the energy goes low. That's when the depression happens. And that's when the energy goes to the lowest part, lowest level, that's when the suicidal thoughts come. तो आपको क्या करना है? Suicidal thoughts, depression के लिए गोलियां थोड़ी ना खानी है. Up the energy, bring it up, that pran shakti. Not वो bicep वाली energy, the pran shakti energy, the life force energy that is responsible for a smile on your face. And that is responsible for a very grumpy mood even when you are looking at the Alps in Switzerland. बहुत सुंदर जगह में हो, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट क्रैश किया, आपके पैसे डूब गए, तो आपकी एनर्जी क्या है? सब बिल्कुल एल्प्स वाल सब गया, एनर्जी खत्म हो रही है. उस एनर्जी को अप करना है. तो मुद्रास थ्रू प्रॉपर And the ब्रीदिंग. third one was Third one just is sattva. sattva. Sattva is when you're happy, joyful, the must without any reason. Beautiful. बिल्कुल. सो ये हरकत है. और फिर तीसरा, फिर ये होता है दोषास, वात पित्त कफ. जब पित्त बहुत बढ़ता है, दैट मीन्स एसिडिटी, फायर एंड एयर जब आता है, बहुत बढ़ता है, देन it is needed to digest the food. Right. But when it goes high, it may cause many diseases. As many as 60 diseases are caused through imbalance of pitta. Wow. As many as 90 diseases are caused, including schizophrenia, dementia and all, through vat indifference. Vat pitta. Vat is vayu. Vayu. Imbalance of air, Right. joint pains and all. तो एक एसिडिटी हो गया, वायु हो गया. वायु हो गया, let's say fire, or pith is fire in it. Right. वायु हो गया, वात हो गया, और कफा. Kapha is the prithvi element, the earth, that has given you the structure in the body. And when it goes imbalance, that's when you start gaining weight and all, क्योंकि imbalance हो रहा है. Right. उसके चलते 40 diseases are caused. तो world में जितनी भी diseases आप देख लो, वात बेस है वात पित्त कफ की कहानी. पे. वात पित्त कफ, ये खफा हो गए. No, and what's beautiful, स्निग्धा, is जो आप बोल रहे हैं कि it's all about सबकी ज़रूरत है
वात की भी है, पित्त की भी है, कफ की Yes, भी है, बट इट नीड्स टू बी इन द राइट balance. proportion, right balance. Correct. नहीं है तब प्रॉब्लम है, Right. आपकी डाइजेशन नहीं होएगा, Correct. ज़्यादा है तो एसिडिटी हो जाएगी, आपको Yes. उसको उस Yes. बैलेंस में मेंटेन करना, अपनी राइट और लेफ्ट को Right. बैलेंस। Yes. That's where mudra comes. So mudra, when I already told the mechanics of breath, the connection of breath with the mudra. जी, So मुद्रा में कुछ नहीं होता है, मुद्रा में ये सारी 5 एलिमेंट्स बैलेंस करता है। एंड मुद्रा, अगर बहुत कोई वैसी कुछ बीमारी है, कुछ है, जैसे अभी somebody a friend call, not a friend from योगिक हैक्स फैमिली से ही हमारे किसी ने मैसेज किया और बताया उनके कोई थे जिनको किडनी में और लिवर में कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं बेसिकली किडनी स्टोन, किडनी वाली प्रॉब्लम थी। तो उनका जो मेडिटेन, थैंक्स टू योगिक हैक्स का डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट डॉक्टर्स, मतलब you राइट, have to continue with the medication and consult your doctors, all those things. So he continued with the practice of the kidney mudra and all, and he was taking his medication. Slowly the medication, this thing, the dose, the strength started coming down. वाओ, And this happened over a time of like 6 to 8 months के बाद शुरू हुआ, because the mudra starts at the base. राइट, इट्स सम मुद्राज आर इंस्टेंट, जैसे अभी हम बताएंगे, कुछ मज़ा आ जाएगा उसको करके, और कुछ टाइम लगाते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, तब हुआ कि, तब कहते हैं ना, एवरी टाइम इट्स अ वाव मूवमेंट मोमेंट, कि ये सब कर सकता है मुद्रा। तो मुद्रा वो सब कर सकता है, वात पित्त कफ, एक एक चीज़ अपने उंगलियों में आप कर सकते हो। सो एक लाइक you said that this is a science. या So where does this science come from? Is it come from the Vedas? Have we been able to quantify it? Yeah, is like how do you study the science of it has mudras? been, mudra has been mentioned in various scriptures. The main mention of this is Hatha Yoga Pradipika, Okay. where it is mentioned, and in different Shiva Sutra and other sutras also, the Puranas and all, they have been mentioned as Yog Ganga. Mudra Yog Ganga hai. So it is a part of yoga. Mudra is very much a part of yoga. Lovely. And That's like I think I was seeing your Instagram and उसमें आपका एक बहुत अच्छी एक रील थी on focus. So it was a very interesting reel जिसमें आपने बोला था कि अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको फोकस की ज़रूरत है, यू वांट इंक्रीज योर फोकस, यू कैन डू दैट। तो कल मेरा एक पॉडकास्ट था एक न्यूरोसर्जन के साथ, सो आई वाज अ लिटिल बिट लाइक ओवरवेल्म्ड कि क्या बात हो रही है, सो आई आई वाज होल्डिंग माय हैंड्स लाइक wow. दैट एंड सडनली ऑनेस्टली मेरा फोकस इम्प्रूव हुआ। आई वाज एंड देन ऑब्वियसली जब एक बार आप कुछ सीख लेते हो तो आपको हर जगह वही वही Yeah. दिखता है। Yeah. And then I was reading something on my on my phone, and then there was this photo of Elon Musk, and in his interview there's Elon Musk, he's like sitting like that, and suddenly I had started noticing that a lot of business Yes. leaders actually use this Mudra. mudra. तो इसके basis like what is मतलब This is the इसकी easiest. science या what is the science like इसमें Okay. क्यों क्यों इससे focus बढ़ता है या क्या हुआ? सो दिस इज द इजिएस्ट मुद्रा। ये 5 एलिमेंट्स पांचों हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, वायु जल है, ये अभी सब इसकी एनर्जी सब एस्केप हो रही है, इनको लाके अरेस्ट कर दो। अरेस्ट कर दिया तो वायु वायु से मिल रहा है, अग्नि अग्नि से मिल रहा है, सब ऐसे हो रहा है, और ये सब बॉडी में ही है। बॉडी में है तो इट्स एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम। सो उसमें एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाता है, इंस्टेंट होता है, बिकॉज ऑल 5 एलिमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर। और जैसे ये एनर्जी बैलेंस होता है, दिस स्टार्ट्स कमिंग डाउन, फोकस आना शुरू हो जाता है, Right. So, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और जैसे जो आप बोल रहे हैं वो वेगस नर्व है, दैट हाँ, होल वो योर सब होता होल है। अब बॉडी। इसी में आप अगर थोड़ी देर बैठ के, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो या इस तरह के उसमें जाते हो, थोड़ी देर अलग से बैठ के अपने साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, जस्ट 2-3 मिनट्स, ये लेके टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ, वो इंस्टेंट कनेक्शन होता है, एंड दैट स्टेज। तब आप यहाँ बैठो और आगे से लेके बैठ के आराम से बात करो, इट कंटिन्यूज द फ्लो। ब्यूटीफुल। बिफोर आई गेट इनटू मोर प्रैक्टिकल हैक्स जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने एजुकेशनल वर्ल्ड में बात कर सकते हैं, इज व्हाट आर सम ऑफ द मिथ्स दैट यू हैव सीन, टॉप 3 or 5 मिथ्स जो आपको योगा में दिखते हैं, या टॉप 2 or 3
एडवांटेजेस जो आपने योगा के देखे हैं, या क्या आपको मिथ्स लगती हैं कि यार ये लोग बोलते हैं लेकिन ये गलत है, हाँ, या ये सही है? आपके राइट। टॉप 5 क्या हुए? सबसे पहला मिथ है, बिकॉज योग में मेडिटेशन भी आता है, सबसे बड़ा मिथ है माइंडफुलनेस। ओके। Mindfulness is not meditation. It's the, I would say, the portico of meditation. जब आपका माइंड फुल है ऑलरेडी चीज़ों से, गिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अरे भैया, इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतने सारे प्रपंच चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहाँ से थिंक पॉजिटिव करेंगे? कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। तो माइंडफुलनेस जो है, माइंडफुलनेस इज द, कैन बी द रिजल्ट ऑफ माइंडलेसनेस, दैट इज मेडिटेशन। राइट। जब व्हेन यू मेडिटेट द माइंड बिकम्स एम्प्टी, हमने कहा ना स्लेट क्लियर हो जाता है। राइट। फिर उसमें आपका जो है, जब व्हेन यू कम आउट ऑफ मेडिटेशन देन अवेयरनेस इंक्रीजेस, राइट। अवेयरनेस इंक्रीजेस, जो बात कर रहे हो आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है आपका। देन द, एंड यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस इज प्रेजेंट मोमेंट। जब आप उस, एंड इट बिकम्स ईजी टू बी इन द मोमेंट राइट नाउ, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में रहो बट यू आर प्लानिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट। वो होता है सबसे बड़ा मिथ है। आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अच्छा, ठीक है। वो प्रैक्टिस नहीं यस, होता है, वो रिजल्ट वो होता है। रिजल्ट होता है। तुम प्रैक्टिस करोगे तो उसमें, नथिंग अगेंस्ट हुएवर इज डूइंग माइंडफुलनेस, माय अपॉलॉजीज, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, राइट। और सेकेंड मिथ इज आई गो टू जिम, आई डोंट नीड टू डू आसन्स। जाओ जिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, लेकिन जिम से जाके आओगे, डोपामीन इफेक्ट होता है, हैप्पी Okay. हार्मोन्स, ठीक है। राइट। When you do meditation and yoga, serotonin effect होता है। Now I'll राइट। tell you the difference between the two. Dopamine is temporary राइट। for few प्लेजर, hours, थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट। बस, जी। राइट। लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जी। डोपामीन इफेक्ट, राइट। और बहुत हाई हो जाते हैं। सिगरेट्स, अल्कोहल, Exactly, all डोपामिन। dopamine. They don't know there's something called serotonin. Serotonin is like long lasting, and it is generated in the head only and only through these practices. कुछ नहीं करना, आपको गुस्सा आ रहा है, चेंज योर ब्रेथ पैटर्न, गुस्सा शांत हो जाएगा। कहते हैं ना, बैकवर्ड्स गिनती करो, 10 जी। 9 8 जी। 7। या। So why not get into a more sweeter and healthier addiction राइट। than getting into these things which will only give you bad health? Again, in earlier conversations with a neurosurgeon, he said the same thing. Ki, the brain is releasing dopamine and serotonin, and we, whether that's alcohol, surgery, smoking, exercise, hit, we're running after dopamine, and Yes. serotonin is more about contentment Yes, and being just calm. So exactly. that's what you're saying. Yes. Is And it's easy to read Google and then talk about these things in a party, right. है ना, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं, ये होता है, पता है, बी इन द प्रेजेंट पावर ऑफ नाउ, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ऐसे करो वैसे करो। बट दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट नॉलेज। It becomes knowledge only when you have experienced it and when you are practicing it. Then when you talk about these things to people, you are coming from the space of conviction. You don't have to convince anybody, you just talk. Your presence matters. ये सारी चीज़ें, वाइब्रेशंस क्योंकि अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग, जो जिम वर्सेस योगा था ना, तो जिम में ठीक है, मसल, इट इज़ फॉर द एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन, स्केलेटल Right. मस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है ये, nothing inside. Yoga is complete. Asanas, I should say asana. It's completely inside all the 9 systems in the body. It Beautiful. works on that. It becomes, many of my students are gymmers. Now they said it's so easy, even my brother. The body had become so tight that they could not take their hands to clasp Right. the Right. fingers. Right. Now when they have started practicing, they said it's so good, and you breathe a lot. The way I do yoga, the authentic yoga, what I have learned from my mentor, Shri School of Yoga and all, it's amazing. So that is how difference between gym and And so it's not a replacement, but no, like, it's not a replacement. it's If not you, the same thing. These are two different these are two different. You just cannot compare yoga and जी। gym. Cannot compare. लेकिन हमने ना उसको replace हाँ, करने हाँ. that's what we Yes, started with, exactly. right? We've just started replacing it without Exactly. understanding कि Yes. this is more a way of living Correct, correct. versus You said it right. Way of living. versus कि ये आपका एक exercise form है Right. for Third myth, very important.
I exercise a lot. I eat the right things. ये है वो है सब कुछ कर रहे हैं, but still my BP is shooting high. A few years ago, you would have, we all heard about the CEO of SAP. He passed away at the age of 35. Right. He was a gymmer, he was a runner. Right. He used to have all proper and no cigarette, no non, सारी चीज़ें अच्छी आदतें थी Right. एकदम बिल्कुल. But still, cardiac arrest. क्यों हुआ? You do everything for the body. But health means three-dimensional fitness: physical, mental, emotional. What were you doing regarding your mental fitness? The stress? Nothing. So that's how the psychosomatic disease, right? It starts percolating at the mind, from the mind to the body. Soma is body. Right. It's a Sanskrit word. English में बन गया psychosomatic. हाँ? Psycho, that is mind. Somatic is, soma is body. Body. तो ये जितने भी डिजीज हैं, फैशनेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज जिनको कहते हैं, डायबिटीज़, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, सारी चीज़ें, ये सब माइंड पे पहले साल 1.5 साल पहले शुरू हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग. यस, आई डू प्राणायाम. कितना क्या करते हो प्राणायाम में? ये करते फिर ये करते हैं, आई फील वेरी गुड. ओके, डू यू मेडिटेट? बिकॉज हर चीज़ का आफ्टर एंड थिंग तो मेडिटेशन है ना. Meditation है. वो पूरी आपकी जर्नी है. या Right, and in fact, this was going to be another question that I wanted to pick up, was the relationship between, you know, yoga and stress. Because today I think all of us are, मतलब सबसे बड़ी problem is, you know, क्या हो रहा है, बड़ा stress है. हाँ, फैशनेबल वर्ड है. यहाँ मतलब ऑफिस का स्ट्रेस है, मतलब उठने का स्ट्रेस है, काम नहीं है तो काम नहीं है का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, मतलब अगर जॉब है तो जॉब में बढ़ने का स्ट्रेस है, नहीं है तो जॉब नहीं है उसका स्ट्रेस है. एंड देन like you said, I think given the hustle culture, it's fashionable to Yes. be stressed. Yes. And if you're not stressed, then there must be something या गुड फॉर नथिंग देन. the other you're like जिंदगी बर्बाद तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, तभी इतने रिलैक्स्ड और चिल हो. यस यस यस. तो योगा और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? कैसे हम योगा को यूज कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? अच्छा, इसको आंसर करने के लिए आई विल गो बैक टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस? राइट. Stress, very beautiful definition that has been given by Shri Shri Ravi Shankar ji, European Union में. ओके. He says, too much work, बहुत ज़्यादा काम, too short a time, समय बहुत कम, उसमें सारे काम करने हैं, and little energy. एनर्जी नहीं है काम करने के, लेकिन करना ही है काम. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द वर्क. रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कंपटीशन है, सब करना ही. वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू वर्क. Right. Then we cannot do about the time. Fortunately, unfortunately, planet Earth में 24 hours है, एक दिन. जी. Unless you want to live in the Saturn planet जहाँ बहुत यहाँ पे ज़्यादा 24 घंटे हैं ठीक और है, उतने यहाँ ही पे साल चलो है. उसी में करना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप. बचा क्या? एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? वो अपने हाथ में है, वो एक्चुअली अपने ऊपर है. That is what the life force energy I was talking about. So when you increase your energy level, everything becomes possible. So when all these things are in shortage, that's when stress comes. Wow. That is stress. Stress को हटाने के लिए we only have to focus on the energy. और energy को up करने के लिए we have to focus on the breath. और breath और energy, breath के साथ energy up होगा. उसके बाद आप थोड़े से आसन्स कर लो, breath और भी डीप जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा एवरी पोर ऑफ द बॉडी में, हर जगह. उससे फिर आपको और अच्छा लगना शुरू होगा. फिर रेस्टलेसनेस जाएगा, अरे ये कैसे करे, यू फील ओवरवेल्म्ड ऑल द टाइम, राइट? ये भी करना, वो भी करना, वो शांत होगा फॉर द मोमेंट. मेडिटेशन कर लो एंड देन यू आर फिट एंड हैप्पी टू फेस द वर्ल्ड द होल डे इफ यू प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग और whatever time. Beautiful. So this is how yoga comes to the rescue, and in times to come, people have started realizing that in times to come, people will definitely understand the real definition of yoga, which is like 1 to Z, not just asana, and then they'll start to, hopefully they start to inculcate it. No, it's beautiful. And जैसे आपने explain किया is पहले understand करें ये stress होता क्या है, Exactly. right? It's at the end of the day a paucity of energy. Yes. And उस energy को आप कैसे करें? So instead of again mindlessly saying कि stress है, breathe कर लो, या take 10 deep breaths, हाँ. just understanding what you just said. हाँ.
यार स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। नहीं है। एनर्जी तब आएगी जब आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेट करोगे, करेक्ट। तो आप एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए ये बॉडी से वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। और ब्रेथ से एनर्जी आती है, ब्रेथ से फोकस आता है, उसके साथ आप क्या क्या करना शुरू कर रहे हो उस पर फिर डिपेंड, देन द होल पैराफर्नेलिया स्टार्ट्स द पैकेज। एक्चुअली योगा इज अ पैकेज डील। so you लेट्स have पुट to, इट दिस yeah, वे। and then it can actually help you यस। go from, यस। focus Emotions. to Emotions can be controlled. If you are, whenever you are angry, have you observed your breath? How is it? Fast, 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 right? Change the breath pattern. ये भी अवेयरनेस से आएगा, ऐसे यूजली नहीं आता। एक ने 10 गालियां दी, आप इंटरेस्ट लगा के 25 गालियां दे दोगे उसको, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मेडिटेशन करोगे, एंगर आएगा, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, एंगर आएगा ही, लेकिन कितनी देर तक टिकेगा? जब गुस्सा आ रहा तो उस समय आप अपने साथ क्या कर रहे हो, right. वो अवेयरनेस आती है सबसे पहले। दूसरा है जब ये ब्रीदिंग पैटर्न, जब हाँ सॉरी एंगर हुआ, फिर उसके बाद जब आप काम एंड नाइस रहते हो तो आराम से चल रही है ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बहुत दुखी रहते हो, आउट गोइंग ब्रेथ इज साई, Right. वो होता है सैडनेस, एक साई आता है। तो ये सब चीज़ हमारे नर्वस सिस्टम को हिलाना शुरू करता है। दैट्स वेयर प्राणायाम कम्स, दैट्स वेयर अवेयरनेस कम्स। और स्ट्रेस और भी, और एनर्जी और कहाँ पे भी ये होती है, डिसिपेट होती है, थॉट्स। होल डे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ, इन दैट रिसर्च जिससे इन अ डे आप गेस करो कितने थॉट्स आते हैं एक ह्यूमन माइंड पे। Wow. 2 लाख, दो Wow. लाख थॉट्स आते हैं इन वन डे ह्यूमन माइंड। और सोचो वो थॉट्स आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। हाँ, मान लो 100 थॉट्स आए, उसमें आप 2 लाख में आप अगर 2 थॉट को भी पकड़ लिए, किसी ने कल कुछ मेरे को कह दिया, वो थॉट आ गया, थॉट आया, थॉट से इमोशन बना, गुस्सा आया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आगे हुआ, मैं कुछ करूँगा उसको, मैं कुछ करूँगी उसको, ये करूँगी। अभी कुछ हुआ नहीं फीवरिशनेस, है कुछ बट भी नहीं हुआ है, लेकिन माइंड देखो कैसे जा रहा है। फीवरिशनेस आ गया बॉडी में, फीवरिशनेस आया, नर्वस सिस्टम हिलना शुरू कर दिया। नर्वस सिस्टम हिला तो उसके बाद वो एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव हो गए, फाइट और फ्लाइट, सिंपैथेटिक नर्वस, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो आया तो सारे ऑर्गन, सारी एनर्जी अपने आप को कर दी कि वो समथिंग इज नीडेड wait, नाउ, something's wrong, कुछ and this होना। was just a thought जस्ट अ थॉट। in your head कि यस। शायद वो मेरे यस। को कुछ बोल वो दे हाँ। तो यस। और यू आर चूइंग ऑन दैट थॉट, और यहाँ पूरा बॉडी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस। फिर बाद में क्या होता है, वो थॉट करते 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 इट लीड्स यू टू डिप्रेशन, लो एनर्जी, डिप्रेशन, दिस दैट, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं एक थॉट से। और अगर दिन भर में आप काम कर रहे हो, 2 लाख थॉट्स आ रहे हो, अगर आप 50-60 थॉट्स पे ध्यान दिया आपने, आप बैठ के सोच रहे हो 30-40% एनर्जी चली गई। तो जो काम आपको 2 घंटे लग रहे हैं करने में, वो काम 2 घंटे में होना चाहिए था, वो काम 3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि योर माइंड इज गोइंग एवरीवेयर, सब right, जगह। right. इंस्टेड आप अपने आप को पहले कंडीशन कर लो ना, सुबह मेडिटेशन कर लो, सब अपना कर लो। अरे कहते हैं ना, आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स कि 24 घंटे में अगर 30 मिनट अपने आप को नहीं दिया तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, राइट? It's true. तो करके एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस, एंड एज यू आर वर्किंग, again after effects of meditation is focus, concentration, good communication skill, people come to you, people listen to you, all those things, even your pet starts listening to you. No, and true, like जैसे आपने बोला with anger, you're ठीक है, emotion शायद फिर भी आएगा, but you're not controlled by that emotion Right. anymore. Right. You're not screaming back and shouting and sending that dirty email. Exactly. You are, you have the ability to take that breath, Right. focus, and as you said, be more reactive, responsive Responsive. versus, Reaction. react to a situation Correct. and drive it beyond Yeah. your control. द मोमेंट वी कनेक्ट द थॉट टू एन इमोशन, एक हुक मिल जाता है थॉट को, ऐसे लटक जाएगा बिल्कुल, अब मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे होता है। तो ब्रेथ जब करते हो, ब्रेथ से इमोशन रिलीज हो जाते हैं, देन द थॉट बिकम्स लाइक अ पासिंग क्लाउड, निकल जाएगा। So you feel you're saying that the when breath work will actually help us release the emotions that are attached or Yes, that are it prepares created. the body for meditation. Don't stop at that only, just release कर दिया तो हो गया, वो फिर से आ जाएगा। आप उसको करके, आप क्लीन करके कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस तो डाल दो उसमें, Right, so that you're able to manage your mind. right. That is there.
again and again. Also, like taking just this conversation forward is, you touched briefly on depression and Yes, anxiety. yes, yes. And I think, again, depression is one of the most common Yeah, topics, concerns, not just for the older generation, very sadly for the kids. youth, for the kids, हमारी especially जो youth है, I think one of Huh, the leading issues that we hear from our students, right. from people who reach out to us is depression. Yes. Very young kids with suicidal thoughts, Oh, yes. tendencies. क्यों होता है ये? कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? आपने कैसे योगा को यूज़ किया है? एंड ऑफ कोर्स विद द डिस्क्लेमर कि you will still need medical attention, but Mm-hmm. what is, again, how can we use yoga to Right. help with depression, anxiety, Correct. suicidal tendencies? So this depression, suicidal tendencies, as I earlier told you, it's the result of low life force energy in the body, in the Right. mind. So at this time, the nervous system is loaded because of stress. It's completely loaded. It's not able to function. That's when people go for counseling and they get into medication. I'll answer this question with one example, one or two examples. So the research, I practice Sahat Samadhi meditation, right? It's with a small mantra, that is sound vibration. So the research was done on this particular type of meditation in Canada, a Okay. city called London, in a psychiatric college or university, something was there. A lot of doctors were there, and the patients were in a hospital. The patients were taught Sahaj Samadhi meditation. They practiced for about 2 months, 8 weeks, right? And then they were tested. So, seven highly clinical patients on pills, right? On medicines. 70% of their depression was gone. 70%. And the doctors were amazed because few doctors were also practicing. Then they admitted, they said, ideally, depression we cannot cure through medicines. We give placebos, we keep changing the medicines, we keep increasing the dosage of medicines, which has a lot of side effects, the kidney, the weight, all those things go Absolutely. haywire. Right. Dependency. Exactly, yes. Right. So Right. that is so, but once they started doing this and the research was done on their cells and all, they knew that the gray cells also went under metamorphosis. That also changed, and the energy, the life force, the super conscious level, the energy, the joy that started, they started experiencing, that was phenomenal. Wow. Dramatically it increased. So they said, and that is why in Munich 2017 there was a conference. There were about 600 papers were presented on the research done on various types of meditation techniques available on the planet Earth. Wow. Usme this Sahaj Samadhi emerged as a winner. All meditation techniques are good. 3 times stronger healing, 3x times happens. Sahaj had 5x times. I'm just giving you an example. Right. Nothing. I'm not Right. prophesizing Right. anything, right? So these are things. And being IT Sudarshan Kriya and meditation also. So about a number of students, especially the younger generation, in Bangalore, I take courses. So there's one guy, 19-year-old kid. He was his uncle got him to do the Sudarshan Kriya course, and I asked him, and he was very depressed, clinically depressed. So the uncle said that he's come from Orissa, and he's studying medical here to become a doctor. And within 6 months, he went into depression because language problem, all those Right. challenges. Right. He had never been out of his home. So he went into depression. So the doctors in Nimhans, they checked him. They said, drop out for 1 year. You just cannot do your studies. 1 साल के लिए आपको पढ़ाई Right. बंद करनी पड़ेगी. That's when everybody got panicky. So he came here, practiced जो भी किया था. There are many techniques. With all due respect, I can talk about what I have been No, but I would practicing. love to know more. So what on It's the a very Sudarshan unique Kriya? breathing technique. Okay. Very unique breathing technique. Very ये आपका course है. This is ये of a अपना certain आर्ट ऑफ लिविंग का duration. ही कोर्स है Okay. करनी है. सो वेरी यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक that takes away the stress from the three-dimensional fitness, the physical level, the Right. mental level, Mental. and the Spirit. emotional level. Right. निकल जाता है. This is the definition of Sudarshan Kriya, and every day you need to practice for about 25 minutes, Got it. and then you see the effect.
It's like a mirror that has gone dirty and you wash it with You're soap and cleaning water. it up and you're And making. after that, when you sit for meditation, it's like looking at the mirror and smiling at yourself. I've actually been able to Yeah. clean up and Yeah. clean out my. So coming to that kid's story, so he practiced, and after that he was practicing, and I directed him to one of our doctors, Ayurveda doctors, because he did need the medical intervention. So she started treating him, in the sense weaning him off from those medications, and he was practicing. Within 4 months, he joined his college, It's beautiful. and he's still in contact. So I have many such examples, especially the kids today. Also, when we take classes, mainly between 20 to 28 years old, they all come and sit. The awareness is increasing now. The youth today is aware, but only thing is they need a direction. So many suicides are happening. So we have to spread out. We have to spread we have to share the benefits and make them realize through experience, not just talk. टॉकिंग तो चलता रहता है, काउंसलर्स के पास चले जाओ, टॉक 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 टॉक, उसके बाद क्या होता है, यू कम बैक, एक गोली खाना होता है, फिर जाओ फिर जाओ. बच्चों में क्या होता है, फिर वो एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. ओ आई एम सीइंग अ काउंसलर, आई एम सीइंग दिस दैट. इससे अच्छा तुम्हारे अपने हाथ में तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, अपना हेल्थ तुम्हारे हाथ में है. मेंटल, फिजिकल, एवरी फॉर्म ऑफ हेल्थ इज in you, within you. All it needs is grit and determination It's beautiful. and discipline. That's what I learned in the Air Force. That introduced me to yoga, actually. Actually, that's very interesting. That's my next question is how do you build that habit, to do yoga? हम बोलते हैं करते हैं, like वो habit formation कैसे कर सकते हैं कि करना है योगा, मतलब what are some पता है क्या, things? ये होता है, हमने कहा ना डिसिप्लिन एंड ऑल, एंड डिसिप्लिन इज वेरी हार्ड टू फॉलो, Yeah. राइट. तो एक तरह से ये डिसिप्लिन आता है जब आपको कुछ परेशानी होती है, when body is undergoing some kind of problem. Right. That time you go to the doctor. When you go to the doctor says you have to walk for 30 minutes daily. Otherwise, ये fear factor. Fear factor brings discipline. Right. नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा. Second thing is awareness, my friends, or awareness through influence. Right. अपने दोस्तों का, ओ ये हो रहा है, अच्छा वो, यार तू ऐसे कैसे कर लेता है, क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ना वहाँ गया था, मैं वहाँ पे एक कोर्स कर लिया, आई प्रैक्टिस. ओ अच्छा अच्छा, पीयर प्रेशर Yes. आ जाता है, भैया तुम भी सीखो, आ जाओ कर लो उसमें. फिर ये दोनों चीज़ें मेन मेन रीजंस. एंड थर्ड इज़, अगर आप अपने में ही थोड़ा अवेयरनेस आ गई, आपके घर के अंदर माहौल उस तरह का हो गया, पेरेंट्स ने कर लिया है, एंड यू आर सीइंग द चेंजेस. जो मम्मा रोज़ डांटती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होती थी, अब नहीं होती है. क्या बात है, मम्मा नहीं होती, अब इंस्टेंट मैं होने लगा हूँ, या मैं होने लगी हूँ. Right. Right. ओह अच्छा अच्छा, मम्मा क्या किया तुमने, ये किया, बच्चों के लिए कोर्स है, या इस तरह से ऐसे करो, या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो. कुछ नहीं करना तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लो, खेल खेल में चैलेंज Right. चैलेंज करो. No, but I think again what you said is so interesting is first of all, like every problem is an opportunity. यस. तो जब आपको पेन आता है तभी फिर सोल्यूशन दिखता है. तो Yes. शायद अगर आपको पेन है, इफ़ देयर इज़ अ लॉस, इफ़ यू गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, जॉब नहीं मिल रही, Yes. आई थिंक इट्स एक्चुअली अ ग्रेट टाइम टू नॉट लुक एट दैट एंड क्राई अबाउट इट, बट यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी. Look inwards. Look inwards and look it as the way to Yes, grow. exactly. And the second thing you said again was, I think the most important thing in your life is who are you surrounding yourself with, Right. right? कि आपके friends कौन है, लोग क्या है, company क्या है. Right. Find the right people, find the people who are actually Yeah. succeeding, building, and surround Right. yourself with those people. Exactly. And To- and just enjoy life आराम से, सात्विक enjoyment जो है, मस्ती वाला करो, and बिंदास. मतलब everything, every problem, no problem is bigger than you. It's only when we make the problem bigger than you, larger than life, then it becomes a problem. Take problems as a challenge. करो, easier said than done, but it does become easy when you start the practices. This is my experience. I used to put in about 16 to 17 hours when I was working in corporate after my Air Force, and then I did MS and then came back to the country. इतना working across different time zones. So बहुत सारे challenges आ गए थे, the spondylitis, the sciatica, all those things were there. Then I started, what am I going to do? Awareness came. What am I doing with myself? Then I started these practices. That's when Sudarshan came into my life. Beautiful. Then I started my practices, and the same work used to get done in 13 hours. I used to get good sleep. I used to be a time with my family and all.
हमने कहा ये तो मैजिक है. That's when I decided. तो ये इस part of awareness बहुत ये part of awareness is very very necessary, that is needed कि to be better without stressing yourself out. Stikta ji, what is the right way of breathing? हमने breathing पे Okay. बहुत की है, but what is the right way of breathing? अच्छा, जब आप breath करते हो, let's take the example. Right now you're breathing. So where are you breathing? Is your chest going up and down? Your tummy going in and out? कहाँ जा रहा है? आराम से breathe करो, don't be conscious. Stomach is moving, Chest is moving. chest is moving. So when the stomach is usually क्या होता है यहीं तक breath है. Of course lungs में जाता है breath, but is the stomach. Full breath आराम से. When you take long breath, पूरे body में breath लो. Breath can be 2 or 3 ways we can do. Long breath, the mid breath, fast breathing. Different patterns of breath changes the emotions. That's how Patanjali has told. Right. Change the pattern. That's why when you're angry, ऐसे चल रहा है, opposite कर दो उसका, even out करो, then it starts right. So we can learn, if you want, we can learn some one pranayam or something, some powerful pranayam. Yes. And then we can do some mudra जो instant पता चल जाएगा. Yes, absolutely. Okay, so it's been Ganpati time, right? Abhi Ganesha festival gaya. So let's learn the Ganesh mudra. So right now we'll learn the mudra and then we'll practice some breathing technique, and then a short 3 to 5 minutes of guided, let's say, meditation, just for the experience. कि क्या चीज़ है? We've been talking for some time. Let's experience something, Love right? that. First mudra is Ganesh mudra. ये हाथ लिया और इसको And pair can be uncross the legs. So you can sit on sofa, you can sit cross-legged, जैसे भी है. At least for mudra, the spine should be straight or rested. okay. Because the energy has to flow. Okay. Right. Now, let's first learn what Ganesh Mudra and how it is done. So Ganesh Mudra, these two hands, fingers clasp them. All right. So right behind, left is in the front. Stand straight or sit straight, and then breathe in, breathe out, and then start pulling against each other. You'll feel some tension here. Continue breathing. Now breathe in. As you breathe out, gently release. And then change the cross of the hand. Now breathe in. Stretch. Breathe out. Keep the stretch on. Breathe in. Breathe out. One more time. Breathe in. As you breathe out, gently release. Now just take your head back. Breathe in, breathe out, down. Breathe in, back. Breathe out, down. And relax. So instantly this starts to relax. Yeah, the whole thing just. Yes, you felt it? Yeah. Instant Ganesh Mudra. This you can do even the people who are work in corporates. Basically for them, desktop yoga में ये कर लो include. This is desktop yoga basically. Yes. So you get your friends along, कर लो. खाना खाने के बाद lunch लिया, बहुत heavy lunch है, meeting भी होने वाली है. What you do? Pull your ears from all directions, up, rotate. Long deep breaths. Pull your ears. Sit for some time, few seconds. Take a deep breath in. Breathe out. Release your ears. And then get into the meeting. And in the meeting, sit with this mudra. Or after heavy lunch, sit with Apan Vayu mudra. So ये वाली जो the ear. So ears have all the nerve endings, each and every part of the body, especially the brains and all. Okay. अगर ear का shape देखोगे ना, it resembles the shape of the fetus in the tummy. Yeah. है ना? जैसे ये head part हो गया, तो ये इसे नीचे खींचो, awareness increases. तो आपको जो मीटिंग में जो नींद आने वाली है ना, और बोरियत महसूस होने वाली है, वो खत्म हो जाती है. Instead you are aware. Wow. Right? So do that. And then उसके बाद अगर लंच के बाद कर रहे हो, तब डेस्क के टेबल के नीचे अपान वायु मुद्रा. So let's. So this is basically. This is Vayu. Vayu It will reduce the gas or whatever, takes care of that bloating and all, flatulence.
And then Apan Mudra. Apan is this mudra. It takes care of the digestion. Apan Mudra. Apan Vayu, complete Mudra. And this is also called, it's magic for heart. हार्ट कार्डियक अरेस्ट है, किसी को कुछ भी हो रहा है, एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है, दिस एक्ट्स एज इंजेक्शन. जिनको हो रहा है उनको पकड़ के मुद्रा लगा के बैठा दो, ऐसे आप पकड़े रहो, चाहे रबर बैंड डाल दो, एंड कॉल फॉर द हेल्प. So just to Just do this. yeah, so just reiterate, if there's a heart problem, if you think someone's having a heart attack, हाँ. you could literally just No, the tip of the index finger, base of the thumb, base of the thumb, and the thumb goes, tip of the thumb touches the middle and the ring finger, and lightly, very gentle touch, दोनों हाथों में लगा के आराम से बैठ जाओ. जैसे हम like मेडिकल में बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है तो एक सॉर्बिट्रेट रखें हाँ, अपनी पॉकेट में या Yes, जीभ के वॉलेट नीचे में, रख जीप के लो. नीचे रख लो. Do Yes, do that, but this can actually be an addition Yeah, to that. yes, कि yes, आपके yes. साथ कोई है, and you said कि आप you can actually put a rubber band there Yes, and just yes, leave it because there yes, with this thing. because उस समय तो तकलीफ हो रही होती है ना, वो जी. कैसे कोई And करे. that's so beautiful. Like these are things that are Yeah, in our hands. We don't have to go out anywhere. correct. ये हमारे पास है, ये नॉलेज हमारे पास है, ये हमारी नेशन की सालों पुरानी हेरिटेज है. Correct, correct. हम उसी को अगर यूज़ कर लें तो हम हाँ. कितनी लाइव्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, कितनी सबकी सेव कर कर सकते हैं. सकते So हैं. that's what drives me every day to come and do release a reel on yogic hacks, purely out of this कि जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए. और इसमें और मुद्रा के लिए कोई टाइम नहीं होता है. आप जैसे अभी हमने बताया, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, नीचे अगर फोकस में दिक्कत हो रही है, नीचे ये मुद्रा लगा के बैठो ना. खाना खा के तुरंत मीटिंग कर रहे हो, कान वान खींच के उसके बाद अपान वायु मुद्रा लगा के बैठो. 4 लोगों को बता दो भैया कर लिए. और ये हमेशा भी रख टाइम एंड अगेन कर सकते हो, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द हार्ट कंडीशन. प्रेग्नेंट लेडीज शुड नॉट टिल द 8 months because the energy is flowing down, so it Right. can cause havoc with the fetus. Lovely. Right? So ये चीज़ अच्छा. एक और हमने देखा, I used to take I take this prenatal yoga also. So my student, she was the position of the baby was not going down. The head was not going down. जो भी उसका टर्मिनोलॉजी होता है. तो 8th month के बाद से आई स्टार्टेड. उसके पहले मुद्रा उसका बाकी दूसरा चल रहा था. उसके 8th month के बाद से आई स्टार्टेड विद द अपान मुद्रा. आई सेड डू इट फॉर 10 minutes 3 times a day. अपान मुद्रा ऐसे करके. This directs the energy downwards, and this is very good when you start at the later stage, like 8th or 9th month में of pregnancy. The fetus, Can turn around. yes, normal delivery. Beautiful. And her doctor was, they had prepared for cesarean and all. Her doctor was amazed. Then she told, this is what I do. तो Amazing. ये मैजिक है मुद्रा का. एंड कभी भी कहीं भी हम तो ये कहते हैं, जब मौका मिले तब कर लो. थोड़ी सी सांस ले लो. कैब में जा रहे हो, इफ़ यू आर इन बैंगलोर और सम लॉन्ग प्लेस जहाँ 5 किलोमीटर जाने में भी 1 घंटा लगता है, कैब में बैठे हो, पीछे बैठ के मेडिटेट कर लो. नाड़ी शोधन प्राणायाम करके मेडिटेट कर लो, हो गया तुम्हारा भाई. प्लेन में बैठे हो, कुछ एक एक्टिविटी कर लो, 20-25 मिनट्स का मेडिटेशन करो. जेट लैग भी कम होना शुरू हो जाएगा उससे. You don't have थकावट to कम होती wait है. for that right No, no, time. no, don't हम wait for the कभी right time. हमें लगता है कि मे बी जब सुबह उठ के 6:30 बजे, it's like it's great if you can do it, but if you Yes. can't, हाँ. then try and find time in where Yes. it's That is possible. where, And yeah, that is where mudra meditation come in practice. वो यहाँ पे ये लोग हीरो बन जाते हैं. बिल्कुल कभी भी कहीं भी करो बैठ के. what about the eyes, Snigdha-ji? Like, we're always on our screens. There's a हाँ. lot of tension and anxiety. Like, Right. आँखों पे बहुत स्ट्रेस रहता अभी है. हमने आँख वाला अभी दिया है, वेरी इजी मुद्रा जो किया है. दिस क्रॉस द हैंड, राइट, और इसको हल्का सा कप करके आँखों में रख लीजिए. आँखों का शव आसन हो जाता है. आँखें बंद कीजिए, और जब आपको लगे पूरा अंधेरा है, तब आँखें खोल के अंदर और ब्लिंक कीजिए. Blink, 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 blink. And then close your eyes. Take deep breaths in and out. Aankhein band. And slowly, very slowly remove the palms. Take a deep breath in. As you breathe out, slowly open your eyes. Instant relief milta hai, especially when you are on the laptop. Wow. Instant relief. I think that has crossed many views on the reel. It was very
Many people were asking for I the think eyes. with this constant scrolling that we do on Yes, social yes, media, yes. on our laptops, and And this, media can be toxic, media can be educated. right? तो मीडिया से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों के जो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है दैट इज़ ऑल्सो मीडिया इज़ ऑल्सो कि रिस्पॉन्सिबल कि जो हम सेंसेशनल न्यूज़ constant, डालते हैं नहीं right, एंड right, right, सेंसेशनल न्यूज़ बिकम्स नेगेटिव न्यूज़ right. looking at all these things and lot of I would say now my yogic hacks family they demand कोर्स निकालो सब्जेक्ट निकाल कुछ करो जो हम सीखें कितने मतलब होता है कब तक Right, स्क्रॉल करेंगे right, हम right. so very soon in about 1 month 1.5 months time we are launching a course on mudra Lovely. And right what will this be like and what will it it'll cover? have it'll first have all the major problems what people have been asking Right, for women for general ailment general problem जो भी होता है right. so they can practice it they'll have like one stop shop कि चलो ये ले लो यहाँ बैठ के practice करो not much time आप Beautiful. जाके आपके पास टाइम नहीं है चलो आधे घंटे का ये करके तो जाओ कम से कम Lovely. एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू डू ऑल थ्रू द डे कि चलो मुद्रा ही तो करना है ना कहीं बैठ के कैसे So basically you'll get a quick hack, quick guide yes yes कि yes. मेरे A lot को of ये guidance and ये you will problems be है. practicing with me Yeah. when you Beautiful. switch it on you'll be practicing with me and it's not that okay do this for 7 breaths or 10 minutes and all no till the time I'm sitting there you also sit and practice with me Beautiful. So it's and it's like you going can to just go in, you'll get a you'll get a yes guide कि yes you'll get मेरे a को taste ये of meditation process you है. get some tips also you get mudra everything packed Beautiful. Thank you and so much. I from think this is so needed. yeah I think I'm feeling just so much more relaxed. My eyes are feeling, I think after I did the ear mudra, suddenly like, you wake up. So I can't imagine actually having a whole library of this as a course would be super, yes that will super be effective. that we are going to launch the course because पहले हमारा plan नहीं था फिर इतना सारा हुआ then we decided I think the people demand it. yes they actually demanded कुछ करो कुछ और दो and it's going to cater to all बचपन से बचपन वाले or beyond It's something I can follow before I'm getting into a meeting, before, if I'm stuck in a traffic jam. It's not something that I have to leave work life and, transport myself to a, Himalayan retreat और फिर मैं अपनी लाइफ में फिर ये आके उसी में आ ये जाओगे या ये मैं योगित मुद्रा और फिर मैं तब मैं काम होंगी. It's कहते हैं ना like you're be on right. retreat the whole Exactly. life You're bringing that retreat to me, to my life, yes like while I'm sitting right here. You also do a lot of this with corporates. And I yes think, so a little bit about that. How do corporates and how do we use yoga like mudra in हाँ corporate lives? And how can corporates benefit from this? कॉर्पोरेट्स के साथ उनके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है दो विल बी डूइंग ऑफलाइन प्रेजेंस आल्सो वेरी शॉर्टली again demand हो रहा है so it's nice to know that so with the corporates the first thing is this portion is very much tense completely tense because micro muscles blocked out all सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं so let's instead of talking let's do the practical Yeah. first I showed that Ganesh mudra Yeah. right Which so we have all learned second is called I call it spondylitis mudra so left hand take it then curl the tip of the yeah ring finger to the base of the thumb place the thumb lightly on the ring finger little finger comes on the nail thumb nail then the middle finger goes on the mount of the thumb right the mount of the thumb and then this one the index finger which is vayu that goes down in vayu mudra right. yeah and the right hand is open to the universe आराम से lap पे रख लो uncross the legs yeah now you'll see and we will breathe here long gentle breaths in and out so we'll do 2-3 breaths and then you can continue after that so the way we can all sit like this eyes closed shoulders relaxed head relaxed let's have a gentle smile on our faces and take a normal gentle breath in breathe out completely relaxing your head neck shoulders breathe in breathe out. Keep relaxing your body with every breath out. Breathe in. Breathe out. So
Continue breathing this way for about 20 to 25 breaths. While you're still in this mudra, focus on your breath. Breathe in. As you breathe out, gently open your eyes. So this mudra, when you practice for longer duration, like 5 minutes, you will notice the release happening all through from the cervical region to this region. It starts releasing, and best done when you are traveling Wow. in the car. You have nothing else to do right now Right. at And there, it's right? just a And it's just आपने हाथ का ही खेल है ऐसे किया this and this one. That's I all. have to get your Yeah. course. If you have joint pain, Ji. opposite side, Vayu Mudra. Take Vayu Mudra, right hand में खाली. Do about 15, 20, 30 breaths. This will start releasing. Amazing. Yeah. This is. So this has obviously been a journey for you to actually start this. You've been able to convert this, and you set up this platform of Yogit Mudra. क्या इंस्पायर किया आपको इसको सेट अप करने में? What has this journey been like? And of course, now I've been told that is also one of the first few Meta verified WhatsApp channels. Correct, Really. yes. So, how has this journey been? Like, what made you do it? Yeah, it's very, I feel happy to tell about this journey. It's been a very natural journey, as though things were already laid out and I just had to walk the path. That's all. So, I've been an engineer, an Indian Air Force commissioned officer, and a technical officer, have seen the Kargil war, have been a part of this. Very proud to say, I've been a proud soldier serving my country when it needed me the most. And now the serving continues. Now serving the nation at the on the borders. Now I'm serving within the country. The our people, our family, the Yogic Hacks family. And it's been a very fulfilling journey, and it started with my overeating one day. Really? I had done some overeaten, and then I went to my team's place, and I said I was taking a Panvayu mudra. Okay. So it was said, okay, let's put a reel to that. Really? Yeah, and that's where it started. My God. And within a day, the channel, number of followers reached to 1,000. Wow. 2,000, 3,000, and then it's history now. Now we are doing third year, and we are at 7,77,000 followers now, Wow. and everybody enjoying the benefits. So this has been a short, not a short journey. I call it, my favorite term is bachpan se pachpan ki journey. So this is how it has been, and every step the team has helped, and we have been working together as one organism, I would say. Beautiful. And And in your content, it's all been about helping people. yes, Right. completely, because पैसा आता जाता रहता है, लेकिन एक बार जब हेल्थ है ना, द 3 डायमेंशनल फिटनेस है ना, तब अपने आप आएगा जाएगा पैसा, सब कुछ होगा, लेकिन हेल्थ तो कम से कम करो. Ending with a note that half the life we spend half the life earning wealth, losing health, and then the second half of the life we lose that wealth to earn back that health. लेकिन उस degree of health कभी नहीं आता है. Absolutely. And answering your question of Meta verified WhatsApp channel, yes, the Meta team reached out to us very recently, and they have seen the journey of Yogic Hacks, and they said, even though you guys are posting very few reels, Right. because we believe in quality, very few reels, but still people are following you, and it's as though people are waiting for the reels. Right. कि next क्या बताएंगे? Yeah. Next क्या Yes, अब सिखाएंगे? कौन सा आएगा, अब क्या आएगा, and they read comments also. It's actually a lot of transformation is happening. So they within 10 minutes they asked us to open the WhatsApp channel. We were not on WhatsApp channel, and within 10 minutes they Meta verified it with a blue tick, Wow. with 0 followers at that time, but now it's picking up. So that is I would say, ultimate achievement being noticed by Meta, and the people. The Yogic Hacks family has made it happen. No, but Really grateful, and grateful to my master and the divine for
everything for Thank this you so journey. much, Snigdha ji, for being here, for sharing your knowledge with us, for teaching me so much, for teaching us so much. I'm going to take this home. I'm going to take this to my family. I think all our viewers will take this to their homes. And again, the fact this has been so quick, so easy, कि सुबह से रात तक meeting से काम पे, I feel there'll be a part of part of your learning that I'll be carrying everywhere. So thank you so much for being here today. Happy to be here. Very, very happy to be here. Thank you very Pleasure. much for this opportunity. Pleasure. Thank you.